So, hello everyone, we are starting the chapter chemical bonding. We have completed the chapter periodic table in inorganic chemistry. Now we are starting with chemical bonding. So, why does the molecule form bonds? To attain the stability and to minimize the energy. Because lesser the energy, more is the stability of a bond. So to attain stability, chemical bonds are formed. So stability is inversely proportional to energy. The greater the energy, the lesser will be the stability. So to attain the stability, they minimize the energy by forming the bonds. Second point can be to obtain the octet rules, because octet rules are assumed to be the stable form of the configuration. But there are some drawbacks to the octet rule. These can be hypovalent compounds and the hypervalent compounds. So hypovalent and hypervalent में क्या difference है? Hypovalent, as the name says, hypo means low. So number of electrons are lower than 8. And in case of hypervalent, number of electrons are more than 8. If we talk about examples, hypervalent का example क्या हो जाएगा? PCl5. And hypovalent का example can be so hypovalent example can be BF3, BeCl2, because in this the central atom is not having the complete octet. In case of boron, the configuration is 2s2 2p1, and fluorines are providing total 6 electrons. So total boron's outer shell has 7 electrons only. And in case of the beryllium, there are only 4 electrons shared by the chlorine. So this is also an hypervalent compound. Hypervalent compound, I have examples PCl5, SF6. These can be example of hypervalent compounds. Moving ahead, we know bond length is directly proportional to size, and bond length is inversely proportional to number of bonds. If carbon atom is forming a double bond, so bond length is lesser than the lesser than the single bond length. So if the carbon atom is forming triple bond, so number of bonds increase हो रहे हैं तो bond length decrease हो जाती है. And bond length is inversely proportional to bond strength. Bond strength ज़्यादा हो जाएगी तो bond length कम होगी, because the atoms are closer to each other. And bond strength ज़्यादा है तो bond energy भी ज़्यादा होगी, and indirectly we can say bond order is ज़्यादा. In case of carbon single bond carbon, it is having the highest bond length, then carbon double bond carbon, then carbon triple bond carbon. So if we talk about bond length values, so carbon single bond carbon have 1.54 angstrom, carbon double bond carbon have 1.34 angstrom, and carbon triple bond have 1.2 angstrom. You can remember these values because in some cases partial double bond character is seen, so we have to see the value between the carbon double bond carbon and carbon single bond carbon. Partial double bond character. Now talking about bond angle is inversely proportional to lone pair on central atom. So greater will be the lone pair of central atom, lesser will be the bond angle. Why? Because lone pair repulsion is more than lone pair bond pair repulsion, and it is more than bond pair repulsion. So in case of central atom having lone pairs, more lone pairs, तो lone pair के बीच में repulsion ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से bonds will be closer and the bond angle will be decreased.
So let's see in the case of CH4, methane, in case of NH3, ammonia, and in case of water, H2O. So methane has bond angle of 109 degree 28 minutes, and ammonia has the bond angle of 107 degree, and water has the bond angle of 104 degree. Why? Because oxygen is having 2 lone pairs and ammonia is having 1 lone pair, whereas carbon is having no lone pair. Lone pair नहीं है तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिलेगा, and bond angle will be 109 degree 28 minutes. And in case of NH3, क्योंकि यहाँ पे lone pair आ जाता है, that's why the structure looks like pyramidal. In case of water, it has a bend shape because ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है. 2 लोन पेयर है तो उनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा होगा, एंड हाइड्रोजन कम्स क्लोजर टू ईच अदर. इसकी वजह से बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी. वी हैव टॉक्ड हेयर कि बॉन्ड लेंथ जब नंबर बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगी, बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर इज़ इंक्रीजिंग. सो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है बिकॉज बॉन्ड लेंथ इज़ डिक्रीजिंग. Moving ahead, let's see the energy and distance graph. This is energy. Y-axis is the energy and x-axis is the distance. So graph looks something like this. So talking about, here is a point where the energy is minimum, and because energy is minimum, so stability is maximum. So it is a point from where the bond is formed, and the energy between the minimum energy and the point of from the origin, the energy is called bond energy. This particular thing is called bond energy. So now moving ahead, let's see the favorable conditions for ionic bond formation. आयनिक बॉन्ड 2 आयन्स के बीच में बनता है, एंड इट इज़ ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल. इट बेसिकली फॉर्म्स बिटवीन द मेटल एंड द नॉन मेटल. तो आयनाइजेशन एनर्जी मेटल की लो होनी चाहिए, तब वो ईजिली इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, एंड इट विल फॉर्म द पॉजिटिव चार्ज. एंड हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल. सो ये आपको याद करने के लिए ज़रूरत नहीं है. दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड ये हम समझ के भी याद कर सकते हैं, बिकॉज हमें आयनिक बॉन्ड बनाना है. सो वी हैव टू गेट द आयन्स गेट करने के लिए अगर हम मेटल से आयन ले रहे हैं तो वी विल गेट द कटायन, एंड वी आर गेटिंग आयन फ्रॉम नॉन मेटल, दैट इज़ द अनायन. अब हमें कटायन बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा. हम इलेक्ट्रॉन रिमूव ईजिली तब कर पाएंगे ना जब उसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी. हमें कम एनर्जी देंगे ना, तो दैट इज़ द फेवरेबल फॉर अस ना. सो इन केस ऑफ नॉन मेटल हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए. मतलब जो नॉन मेटल है इट शुड ईजिली टेक द इलेक्ट्रॉन, और हमें एनर्जी कम देनी पड़े उसमें. So it will having the high electron gain enthalpy of non-metal. It will easily form the anion. Let's talk about cation का example Na+, and the anion का example Cl-, forming the NaCl. With these two components, we also have to get high lattice energy. What is lattice energy? The energy released when the two ions combine together and form a lattice. So lattice energy is amount of energy required to break 1 mole of ionic compound. I think I have said the opposite definition. So lattice, sorry for that. So lattice energy is amount of energy required to break 1 mole of ionic compound. 1 mole of ionic compound को उसके रिस्पेक्टिव आयन्स में ब्रेक करने को जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज़ कॉल्ड द lattice energy.
इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली, इसके लिए हम बॉर्न-हैबर साइकिल यूज़ करते हैं. यू मस्ट बी फैमिलियर विद द बॉर्न-हैबर साइकिल. बॉर्न-हैबर साइकिल में क्या करते हैं, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, अगर हम एटम्स से बात कर रहे हैं, Na सॉलिड प्लस Cl गैस, इससे हम फॉर्म कर दे रहे हैं NaCl एंड एक्वस. तो हाउ कैन वी फॉर्म दिस? फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दीज इनटू देयर रिस्पेक्टिव आयंस. आयंस में फॉर्म करेंगे, देन वी विल चेंज देयर स्टेट एंड देन वी विल कंबाइन देम. सो इनके बीच में जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है, द आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन सबको ऐड ऑन करके हमें जो रिजल्ट मिलेगा, दैट इज़ द आयनाइजेशन एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन. मूविंग अहेड, लेटेस्ट एनर्जी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड लेटेस्ट एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. चार्ज जितना ज़्यादा होगा लेटेस्ट एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, एंड साइज जितना ज़्यादा होगा लेटेस्ट एनर्जी उतनी कम होगी. लेट्स सी बॉन्ड एंगल. वी हैव नॉन बॉन्ड एंगल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम. सेंट्रल एटम में जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे, बॉन्ड एंगल उतना कम होगा, क्योंकि रिपल्शन ज़्यादा होगा. अब नाउ टॉकिंग अबाउट बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम. सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी, बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा होगा. सो एग्जाम्पल विल बी NH3 is more than PS3. Here nitrogen is having more electronegativity than the phosphorus. Moving ahead, bond angle is also directly proportional to size of surrounding atom. बिकॉज साइज ऑफ सराउंडिंग एटम जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रिपल्शन होगा सराउंडिंग एटम्स के बीच में, एंड इट विल इंक्रीज द बॉन्ड एंगल. इन केस ऑफ OF2 द बॉन्ड एंगल इज़ लेस देन OCl2, बिकॉज Cl ज़्यादा साइज में ज़्यादा बड़ा होता है देन द फ्लोरीन. सो क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्शन ज़्यादा होगा एंड बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा. नाउ मूविंग अहेड, bond energy. We had talked about bond energy is inversely proportional to bond length and directly proportional to bond order. Let's see, bond energy is inversely proportional to size also, and bond energy is directly proportional to number of bonds, as we have talked about. There are few exceptions of bond energy. So carbon-carbon bond has the maximum energy, then nitrogen single bond, then oxygen single bond, and then the fluorine single bond. Because fluorine atoms में जो है lone pair ज़्यादा होते हैं, so these will cause the repulsion. तो इनकी bond length increase हो जाएगी, bond length increase हो जाएगी तो bond energy decrease हो जाएगी. One more trend you have to remember, bond energy, or we can say as bond dissociation energy. This is a very important question. इससे बहुत बार NTA क्वेश्चन पूछ चुका है. क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड देन आयोडीन. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर इनमें ऐसे होता है. वैसे तो डाउन द ग्रुप जाने पे बॉन्ड एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ होनी चाहिए. सो फ्लोरीन शुड बी हैविंग द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी बिकॉज इसका स्मॉलेस्ट साइज होता है. बट ड्यू टू द स्मॉलेस्ट साइज एंड देयर इज़ मोर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन. स्मॉल साइज़ की वजह से यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाएगा एंड बॉन्ड वीक हो जाएगा. बॉन्ड वीक हो गया तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी. वैसे फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए थी बिकॉज फ्लोरीन का साइज स्मॉल है तो उसकी वजह से एटम्स क्लोज होंगे और उनमें बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी बिकॉज उसको ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ कम हो रही है. तो मूविंग अहेड, लेट्स चेंज द पेन कलर. ओके, सो मूविंग अहेड, नाउ टॉक अबाउट VBT.
valence bond theory. VBT is valence bond theory. It says about extent of overlapping की अगर हम बात करें, extent of overlapping is directly proportional to closeness to nucleus. न्यूक्लियस से कितना क्लोज है वो डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे. तो ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स. जितना ज़्यादा डायरेक्शनल नेचर होगा ऑर्बिटल्स का उतनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी. सो एस ऑर्बिटल जो है नॉन डायरेक्शनल है बिकॉज इट इज़ स्फेरिकल इन शेप. नॉन डायरेक्शनल. P and D orbitals are directional. Let's talk about positive overlapping. Positive overlapping में क्या होता है, सेम साइंस के जो लोब हैं वो ओवरलैप करेंगे और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. लेट्स टॉक अबाउट, यहाँ पे अगर हम बात करें, दिस इज P ऑर्बिटल, दिस इज़ अनदर P ऑर्बिटल और इसके प्लस लोब ओवरलैप कर रहे हैं. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव ओवरलैपिंग बिकॉज सेम साइन के लोब जो है, दिस इज सेम साइन लोब and these are overlapping, so bond is formed. Talking about negative overlapping, no bond is formed because plus lobe जो है वो overlap कर रहा है negative lobe के साथ, तो there will be no bond formation. In case of zero overlapping में इफेक्टिव जो ओवरलैपिंग है वो ज़ीरो हो रही है, इसलिए नो बॉन्डेज फॉर्म. So let's see the order of repulsion. We have already talked about lone pair. Lone pair have the maximum repulsion, then the lone pair bond pair, then the bond pair bond pair. Lone pair bond pair, and then the bond pair bond pair. Seeing the axial overlapping can be of two types. पहला axial overlapping हो सकता है. axial overlapping को हम क्या बोल सकते हैं, head on overlapping. So it can be along the internuclear axis. If it is along the internuclear axis, then the sigma bond is formed. And there is an star point. S orbitals always form the sigma bond, and this is a stronger bond. Always form sigma bond, and sigma bond is stronger than the pi bond. Second type of overlapping is parallel overlapping or sidewise overlapping. So here the overlapping is above or below the internuclear axis, and the pi bonds are formed. First bond formed is always sigma. Second bond जो form होगा that is the pi bond. So moving ahead, let's talk about some compounds. BF3, which is trigonal planar. Talking about the hybridization bond angle and the lone pairs of several compounds. BF3 trigonal planar, so bond angle is 120 degree and lone pair is 0 because boron has no lone pair on it. SO2, in case of SO2, sulfur is forming of two bonds. So it is also trigonal planar.
bond pair is equals to 2, lone pair is equals to 1. So there is one lone pair on sulfur and two bonds it is forming, and sulfur is forming double bond. So shape is different in this case. In the case of BF3, diagonal planar was the shape and the geometry both. In case of SO2, shape is V shape, बिकॉज हम शेप के केस में लोन पेयर नहीं देखते हैं. सो हाइडिंग द लोन पेयर, व्हाट वी सी, अगर हमने लोन पेयर हटा दिया यहाँ से तो दिस शेप इज़ वी शेप, और वी कैन से इट इज़ बेंच शेप और एंगुलर शेप. सो इट इज़ वी शेप और बेंच शेप और द एंगुलर शेप. And theta is less than 120 degree. Why less than 120 degree? Because the lone pair on the central atom increases, so bond angle decreases. Moving ahead, let's talk about CH4. So in CH4, the bond pairs is equals to 4, lone pair is equals to 0, and it is forming the tetrahedral structure. So theta is equals to 109 degree 28 minutes, and it is about 6 bond angles. Structure देखें तो this is the structure of CH4. Moving ahead, let's talk about ammonia, NH3. Bond pair is equals to 3 and lone pair on ammonia is equals to 1. Because of the lone pair, the bond angle decreases. So it is tetrahedral. So it is having tetrahedral geometry, and the shape will be covering the lone pair. अगर हम लोन पे हटा देंगे तो शेप विल बी pyramidal, and angle will be 107 degrees. Moving ahead, there is general rule for lone pair shape and geometry. If lone pair is equal to 0, then shape is equal to geometry. Geometry is equal to the shape, as we see in the case of methane. Shape and geometry are the same because there is no lone pair. So we can say that geometry, it depends on hybridization. What is the hybridization of the central atom? It is sp3, sp2, sp3d or sp3d2. Depending on hybridization, the geometry is decided, but shape is decided on the basis of bond pair plus lone pair. In case of water, let's see, bond pair is equal to 2, lone pair is also equal to 2. So its geometry is tetrahedral. Because it is sp3 hybridized. But the shape in this case is V shape, similar to SO2, or the angular shape or the bench shape. Due to the lone pairs, two lone pairs present on the oxygen atom, the bond angle decreases less than 109 degree 28 minutes, and exactly it is 104 degrees. Moving ahead, let's talk about PCl5. We had talked about PCl5 earlier also. It is a hypervalent compound. So PCl5 में bond pair is equal to 5
Lone pair is equals to 0 because phosphorus will be forming 5 bonds only, and the geometry is trigonal bipyramidal. TBP. So यहाँ पे geometry diagonal bipyramidal lie because hybridization is sp3d. So it will has three equatorial bonds, and equatorial bonds will be shorter, and it will have two axial bonds. They will be longer and weaker. Seeing the structure P, Cl, 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 and Cl. So these three are the equatorial bonds in one plane, and these are the axial bonds. So total 3 bonds will be 120 degree. These 3 bonds will be in 120 degree, and 6 bonds will be 90 degree, whereas 1 bond will be 180 degree. So this Cl bond is 180 degree. Moving ahead, let's talk about SF4. SF4 में क्या होता है? Bond pair is equals to 4, whereas the lone pair is equals to 1. So because of the lone pair, the hybridization is sp3d, and sp3 is diagonal bipyramidal as we seen here. So geometry is diagonal bipyramidal. Talking about the shape में क्या हो जाएगा? seesaw हो जाएगा, because the most of the time the lone pair occupy the equatorial position only. So if we talk about SF4, this is the F, this is F. These two bonds are also fluorine bond, and this is the position of lone pair. This is the equatorial position and occupied by the lone pair. So this shape is looking like the seesaw. Moving ahead, let's talk about ClF5. So Cl is forming the 5 bonds, and lone pair on it is 1 because it has the 7 outer electrons. So its geometry is octahedral. Why octahedral? Because its hybridization is sp3d2, and the shape will be square pyramidal. So talking about ClF5, so this is ClF5. The shape will be square pyramidal. So, and the geometry will be octahedral. So this is the shape of ClF5. It is forming one pyramid this side and one square on the plane. Moving ahead, it is XeF4. XeF4 में आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं. सो बॉन्ड पेयर इज इक्वल्स टू 4. लोन पेयर कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे. सो द ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल अगेन because of the hybridization sp3d2, and the shape will be square planar because 2 positions will be occupied by the lone pairs, and rest we will have 4 bonds in one plane. Xe, F, 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 F.
2 will be the lone pairs, this and this. Moving ahead on XeF6. XeF6 में क्या होता है, बॉन्ड पेयर्स इज इक्वल टू 6 एंड लोन पेयर कितना बचेगा, 1 बचेगा. सो यहाँ पे क्या होगा, वी विल टॉक अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन. इट विल बी sp3d3. सो sp3d3 के केस में द ज्योमेट्री इज pentagonal bipyramidal and the shape will be distorted octahedral. So complete octahedral नहीं बनेगा, it will be the distorted octahedral. Let's see the shape and the geometry. Xe 1 2 3 4 5 6 F F F F F and F. There will be one lone pair. So the shape will be distorted octahedral because due to the lone pair there will be some decrement in this bond angle. Moving ahead, let's talk about percentage S character and electronegativity relation. Percentage S character basically percentage S character is directly proportional to electronegativity. So higher will be the electronegativity, higher will be the percentage S character. In case of sp hybridization, 50% is the S character. In case of sp2 hybridization, 33.3% is the S character. In case of sp3, it will be 25% S character. So if we talk about electronegativity in hybridizations, sp, sp2 and sp3, so it is sp, sp2, then sp3. Moving ahead about the dipole moment of, in case of dichlorobenzene, in case of haloalkane and haloarene chapters, you will see the table and the dichlorobenzene dipole moments. So ortho is having more than meta, is having more than para. Why? Because para में जो है सिमेट्री आ जाती है, because of which both dipoles cancel out each other. Moving ahead, percentage ionic character. Percentage ionic character is experimental dipole moment upon theoretical dipole moment into 100, and percentage covalent character is 100 minus percentage ionic character. Talking about formal charge कैसे निकालते हैं? तो फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए वी डू सिंपली वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे. रिमेंबर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात करें, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर की नहीं, minus half of bonding electron. If we talk about non-bonding electron, these are basically the lone pair electrons. So let's talk about Benz rule. What does Benz rule state? Electronegativity on atom occupying the electronegativity on atom is more, so it will occupy the axial position
and generally lone pair occupies the equatorial positions. So from these 2 points you have to remember कि अगर हमें ऐसे कोई कंपाउंड मिल गया जिसमें दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम्स जो हैं वो सराउंडिंग एटम्स में हैं, सो यू हैव टू डिसाइड विच टू ऑक्यूपाई द एक्सियल पोजीशन एंड किसे हमें इक्विटोरियल पोजीशन देनी है. सो इन केस ऑफ जिसमें जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हम उसे एक्सियल पोजीशन दे देंगे एंड लोन पेयर को तो हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन देंगे, एंड जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसे इक्विटोरियल पोजीशन दे देंगे. Let's see some more structures. ClF3, it is having bond pair is equal to 3 and lone pair is equal to 2. So the hybridization is sp3d. Because sp3d है तो geometry is again diagonal bipyramidal and shape is T shape. So if we see ClF3 कैसे बनाएंगे, Cl F F and F. Now two equatorial position will be given to the lone pairs only. So this shape is looking like T. So this is our T shape. Moving ahead, XeF2. So bond pair is equal to 2 and lone pairs is equal to 3. So its geometry is diagonal bipyramidal and it is linear in shape. Diagonal bipyramidal because its hybridization is sp3d. How linear in shape? Because there are 3 lone pairs. Lone pairs will definitely occupy the equatorial positions and the bonds will occupy the axial positions. So this is the linear shape. Moving ahead, let's see SF6. SF6 के केस में क्या है, बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 6 एंड देन द लोन पेयर 0 हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ विच द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2 एंड ज्योमेट्री इज स्क्वायर बाइपिरामिडल और द octahedral. Here is no distorted octahedral because the bonds are formed in the shape of octahedral only, and there is the presence of no lone pair. So there are 12 bond angles which are 90 degree and there are 3 bond angles which are 180 degree. FSF and FSF, this FSF, these are 180 degree and all the SF bonds are 90 degree from front and the back. Moving ahead, IF7 के केस में बॉन्ड पेयर इज इक्वल्स टू 7 है, लोन पेयर इज इक्वल्स टू 0 है. सो द ज्योमेट्री इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल. देयर आर 5 बॉन्ड एंगल्स दैट आर 72 डिग्री. देयर आर 10 बॉन्ड एंगल्स दैट आर 90 डिग्री. देयर आर 1 बॉन्ड एंगल विच इज़ 180 डिग्री. This is IF7. Let's move ahead. We have talked about the dipole moment and electronegativity relation. They are directly proportional. Percentage as character and the electronegativity relation. Percentage as character is directly proportional to electronegativity. Then we moved about the dipole moment among the dichlorobenzene. It is ortho is more than meta is more than para. So let's talk about what is dipole moment. I missed out the sequence, so explaining the dipole moment here only. Mu is equal to q into charge into distance. So it is a vector quantity and it is always from positive to negative sign. We use centimorgan or ESU. We use Coulomb meter or ESU.
ESU centimeter or dBi as the unit of dipole moment. So dipole moment is directly proportional to electronegativity. Dipole moment is inversely proportional to number of chlorine. Talked about dipole moment is directly proportional to electronegativity, and dipole moment is inversely proportional to number of Cl bonds. Let's talk about the most famous example, कार्बन क्लोरीन, कार्बन फ्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन एंड कार्बन आयोडीन. इसमें डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर ये होता है, एंड इट इज़ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन बिकॉज जो चार्ज है उसमें कार्बन फ्लोरीन का ज़्यादा होता है देन द कार्बन क्लोरीन, बट इन केस ऑफ डिस्टेंस अगर हम देखें तो कार्बन क्लोरीन का ज़्यादा होता है कार्बन फ्लोरीन से. सो हियर द डिस्टेंस फैक्टर प्रीडोमिनेट्स एंड ओवरऑल कार्बन क्लोरीन का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है कार्बन फ्लोरीन से, एंड देन द सेम ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप. Let's talk about the net dipole moment. Net dipole moment is 0. Then the compound is non-polar. Then the molecule is non-polar. If mu net is not 0, then the molecule is polar. So mu is always towards the lone pair. In case of there is the presence of lone pair, तो mu जो है always towards the lone pair जाएगा. और नॉर्मली केस में नेगेटिव टू पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा इसका डायरेक्शन. सो लेट्स कंपेयर द डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 विथ NF3. सो NH3 का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है NF3 से. वाई? बिकॉज NH3 के केस में वन लोन पेयर H H एंड H. दिस इज़ द शेप ऑफ NH3. और NF3 की बात करें तो दिस इज़ द शेप ऑफ NF3. अब बिकॉज H की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज़ लोअर देन द नाइट्रोजन, सो द डाइपोल मोमेंट विल बी टूवर्ड्स नाइट्रोजन. In case of NF3, the fluorine are more electronegative, so dipole moment will be towards the fluorine. So these both will together accumulate as this, and in case of this, these will towards the nitrogen, and these will these will be adding up because here it is towards the lone pair, and here also it is towards the lone pair only. So यहाँ पे तो अपोज हो रहा है फाइनल रिजल्टेंट का दिस साइड एंड लोन पेयर्स का दिस साइड, तो ये वैल्यू जो है कम हो जाएगी, और यहाँ पे दोनों एड अप हो रहे हैं तो इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी. लेट्स मूव अहेड. लेट्स टॉक अबाउट एन इम्पॉर्टेंट रूल, दैट इज़ द फजान्स रूल. It is the most important rule in organic chemistry to find the covalent character in the ionic bond. Covalent character find कर रहे हैं in the ionic bond. So covalent character, it states that covalent character is directly proportional to polarizing power, and it is directly proportional to polarizability. So maximum covalent character, cation should be small, and anion should be large. So for as we talked about covalent character, it is directly proportional to size of anion. Because we need the large size of an ion, greater will be the size of an ion, greater will be the covalent character, and it is inversely proportional to size of cation. Why? Because cation का size छोटा होगा then covalent character ज़्यादा होगा, and covalent character is directly proportional to charge on cation and an ion both. Greater will be the charge, greater will be the covalent character because of the Fazan's rule. So let's talk about the drawbacks of valence bond theory. We have seen the geometry and the hybridizations and the shape due to the VBT only, valence bond theory.
Now let's talk about some drawbacks. It could not explain the paramagnetic behavior of oxygen. Why oxygen is paramagnetic besides having the even number of electrons. So second point, it does not explain the fractional bond order, because यहाँ पे जो हमें bonds दिखाए हैं these are the complete single or the double bonds, but it does not explain any fractional bond orders. It does not explain the stability of molecule. Whether the molecule is stable or not stable, it does not explain whether the molecule exists or not. Let's talk about bond order. Bond order कैसे calculate करते हैं? Half of number of bonding electrons minus number of anti-bonding electrons. So these are number of electron in bonding molecular orbital. These are number of electrons in anti-bonding molecular orbital. As we talked, bond order is directly proportional to bond stability or bond strength or bond energy. So now the question arises, bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital, from where these comes? So after the failure of VBT, there was new theory developed, that was MOT, molecular orbital theory. And it states about there are two types of orbitals. These are anti-bonding molecular orbital and the bonding molecular orbitals. So, and it states that number of atomic orbitals किसी atom में जो है, they will be equal to the number of molecular orbitals. Consisting of both anti-bonding and bonding molecular orbitals. So bonding molecular orbitals. What are bonding molecular orbitals? Bonding molecular orbitals are formed due to constructive interference. Constructive interference of two atomic orbitals. So bonding molecular orbitals has lesser energy, more stability, because they are forming the bonds. These molecular orbitals are required in the formation of bond. So they will be having low energy, more stability, and electron densities increases in them. Talking about anti-bonding molecular orbitals, these are formed because of the destructive interference. And electron density decreases. And they are less stable and having the more energy. So how to write the electronic configuration in terms of molecular orbital theory? So electronic configuration, it is also helpful in determining the paramagnetic and diamagnetic behavior of the molecules or compounds. So case 1 will be, it is divided into two cases. When the number of electrons are less than or equal to 14, that is of नाइट्रोजन, मतलब 14 से अगर कम है या इक्वल है इलेक्ट्रॉन्स, सो इट विल बी सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, then it will be pi 2px is equals to pi 2py, then sigma 2pz, then pi star 2px is equals to pi star 2py,
देन सिग्मा स्टार 2p/z। हमें यहाँ तक की नीड पड़ेगी। सो दीज आर अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एनर्जी। सो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे सिग्मा 1s में, देन सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s, देन इट विल बी पाई 2px, पाई 2py, देन सिग्मा 2pz, एंड देन द पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, एंड सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz. In case of case second, let's see when the number of electron is more than 14. In case of oxygen, to explain the paramagnetic behavior also, this molecular orbital theory was formed. So first we will fill sigma 1s, then sigma star 1s, then sigma 2s, then sigma star 2s, then it will be sigma 2pz, then it will be pi 2px is equals to pi 2py, then it will be pi star 2px is equals to pi star 2py, then it will be sigma star 2pz. अब यहाँ पे चेंज क्या है इन दोनों में बस एक छोटा सा चेंज है, दैट सिग्मा स्टार 2s के बाद here we are getting pi 2px is equals to pi 2py and then the sigma 2pz. बट इस केस में क्या होता है, पाई 2px और पाई 2py है जो इनकी कम एनर्जी हो जाती है एंड इनकी ज़्यादा एनर्जी हो जाती है देन द सिग्मा 2pz. तो इन दोनों की पोजीशन जस्ट इंटरचेंज हुई है, बाकी सारा सेम है. सो रिमेंबर दीज डिफरेंसेस. इन केस ऑफ लेस देन 14 है तो उसके केस में क्या होता है, जिनका इक्वल है उनकी एनर्जी कम है. अब 14 से जिसमें ज़्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन, उनमें जिनकी एनर्जी बराबर थी वो मिलके ज़्यादा हो गए और उनकी वो बाद में फिल होंगे बाई सिग्मा 2pz के. लेट्स ट्राई टू फिल द electrons in orbitals. So if we talk about 14 electron containing species only, that is nitrogen. So let's fill sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2. 8 electrons are filled till now. Then pi 2px1, then pi 2py1. So 10 electrons are filled. Then pi 2px1 again. So it will be filled 2. It will be filled 2. So total 12 electrons have been filled. Now moving on to the sigma 2pz, 2 electrons will be filled here. These complete the 14 electrons. In case of number of electron more than 14, let's talk about oxygen and why it is paramagnetic. So oxygen के case में we will have to fill the 16 electrons. So here this will be sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, sigma 2pz2. Total electrons filled are 10 now. Pi 2px1, pi 2pxy, pi 2py2, pi 2px2. Then here will also be 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 electrons have been filled till now. Now we have to fill in the antibonding molecular orbitals of pi 2px and pi 2py. They have the equal energy. So first we will give 1 electron here, then 1 electron here. So total कितना हुआ? It comprises of 16 electron. अब because antibonding molecular orbital में जो electrons हैं, these are unpaired. So the oxygen molecule is paramagnetic. So highest occupied molecular orbital here it is pi star 2px and pi star 2py. No, we are asked about highest occupied molecular orbital, not highest occupied and antibonding molecular orbital. No, it is not mentioned about antibonding molecular orbital or bonding molecular orbital, so we will consider it as only molecular orbital. So this is the highest. So in case of oxygen, the HOMO will be sigma star 2px or sigma star 2py.
and in case of oxygen the LUMO will be sigma star 2pz. Sorry, it's pi star 2px and pi star 2py because these are the highest occupied molecular orbitals. And if we talk about lowest unoccupied molecular orbital, it is sigma star 2pz because it is not occupying any of the electron. So this was all about the chemical bonding. It was the second chapter of inorganic chemistry. We have talked detailed about it. I hope you all have understand the chapter and will be able to solve the MCQs. So this was all about for today. Keep hustling and stay tuned. Thank you.